welcome back to another video, and today's video is going to be very special, and you might be wondering that what it is, so you'll be getting to know within a second. So the thing is that it has been asked a number of the time, and many of the candidates have been very fascinated. And if you talk about ONGC, you talk about one thing, that is definitely one thing, and which is basically the salary. So yes, in today's video we are going to discuss about the salary and allowances. So I'll be telling you each and every allowance that ONGC pay to a candidate who is getting recruited through the GATE examination, right? So in the first part, I'll be sharing each and everything that ONGC pay in terms of the monetary benefits. In the second part, I'll be telling you about the 14 days on off pattern, because a number of the candidates are always confused that do we get separate leave, or this is what we get as a 14 days off. So in second point we are going to discuss about the 14 days on off pattern. In the third point, I'll be telling you about the quality of the food that ONGC deliver at the offshore area and what is the cost of that food that we incur, right? And in the fourth and the last point, I'll be discussing about the shift, like the time of working and the kind of working once again, right? So if you haven't subscribed to my channel, just give your 1 second and subscribe to my channel, and let's enjoy the video. So in first part, and it has been asked by number of the candidate, because जब भी हम prepare करते हैं और जब भी हम ONGC की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज आती है सैलरी, राइट, और द अलाउंस दैट ONGC पे. सो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस के बारे में बात करने वाले हैं. इन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये तीनों पार्ट दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी मोटिवेटिंग टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट द सैलरी, तो पहले आपका होता है बेसिक, राइट, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू नंबर ऑफ द अलाउंसेस दैट ONGC पे. तो आपको जो अलाउंसेस कैलकुलेट करने हैं वो सैलरी को ही कैलकुलेट करने हैं. अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपको 15% ये अलाउंस मिलता है, दैट मीन्स 15% ऑफ द बेसिक सैलरी, राइट. तो आपका बेसिक सैलरी होने वाला है 60,000. सो बेसिक से इस 60,000, उसके ऊपर आपका DA, that is diurnal allowance, you can take around 16%, 15 to 16% you can take. तो आपका ये आपका डियरनेस अलाउंस हो गया. तो आपका बेसिक 60,000 प्लस डियरनेस अलाउंस दैट इज 16%, प्लस आपका कैफेटेरिया अलाउंसेस दैट वुड बी अराउंड 35% ऑफ योर बेसिक सैलरी. तो आप इन तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए. 60,000 प्लस DA दैट इज 16% प्लस कैफेटेरिया दैट इज 35%. ये आपका एक सैलरी हो जाता है. इसके बाद शुरू होते हैं अलाउंसेस, ठीक है. इसके बाद शुरू होते हैं अलाउंसेस. तो आप अपना पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाइए. आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी अलाउंस दैट ONGC पे टू ए कैंडिडेट हु गेट रिक्रूट थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, राइट. सो अब बात करने वाले हैं अलाउंसेस के बारे में. तो पहला अलाउंसेस जो आपको मिलता है और जो वन टाइम मिलता है, दैट इज द फर्नीचर अलाउंसेस, ठीक है. तो ONGC आपको पे करता है 1.5 लाख रुपीज इन टर्म्स ऑफ द फर्नीचर अलाउंसेस विच इज वन टाइम पे, यानी कि आपको एक ही बार पे किया जाएगा, ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ द अलाउंसेस विच इज द लैपटॉप अलाउंसेस, ठीक है. तो आपको लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपीज हर 3 साल में मिलता है, ठीक है. तो आपका एक दूसरा अलाउंसेस हो गया लैपटॉप अलाउंसेस पर 3 ईयर, राइट. नाउ तीसरे अलाउंसेस में आपका आता है मोबाइल अलाउंसेस. तो आपको मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है 20,000 रुपीज पर 2 ईयर, यानी कि आप हर 2 साल में एक नया मोबाइल वर्थ 20,000 रुपीज खरीद सकते हैं ONGC के पैसों से, ठीक है. सो दिस इज गोना टू बी द थर्ड टाइप ऑफ द अलाउंसेस विच इज द मोबाइल अलाउंसेस विच इज अराउंड 20,000 रुपीज पर 2 ईयर. नाउ आगे बढ़ते हैं. चौथा जो अलाउंसेस होता है विच इज यूनिफॉर्म अलाउंसेस. आपको यूनिफॉर्म के लिए भी पैसा दिया जाता है, एंड दिस इज 33,000, और जो आपको हर एक क्वार्टर में मिलता है. दैट मीन्स आपको हर 3 महीने में 33,000 इन टर्म्स ऑफ
आपका यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो ये आपका चौथा अलाउंसेस हो जाता है। पांचवें अलाउंसेस में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एचआरए की। ठीक है, तो आपका जो भी एक ऑफशोर कैंडिडेट हो गए, एक ऑनशोर कैंडिडेट हो गए, तो जो भी ऑफशोर कैंडिडेट होने वाले हैं वो अपना अप डाउन अपने होम टाउन से करते हैं, बिकॉज nobody would like to stay 14 days in the ONGC guest house. Rather, they would prefer to go their home if they are getting 14 days off. So the people who are doing the offshore job, they are on the 14 days on off pattern or 21 days on off pattern. So obviously they might be doing up and down after 14 days from their home only. So they will be getting the HRA. And the people who are staying in the ONGC guest house or in the ONGC colony, they will not be entitled to get any of the HRA. ठीक है, तो आपका जो भी ऑफशोर वाले कैंडिडेट है और जो कि ओएनजीसी कॉलोनी में ओएनजीसी के गेस्ट हाउस में स्टे नहीं कर रहे हैं, वो एचआरए की इंटाइटल्ड है। तो ये आपका चौथा अलाउंसेस था एचआरए। तो ये डिपेंड करता है upon the city, in which city you are living. So if you are living in a metro city which comes under the category X, then you will be entitled to have 24% HRA, 24% of your basic salary, that is 60,000. So ये आपका HRA हो जाएगा. If you are staying in a middle class city which comes under the category of the BY, so you will be having 16% HRA. और अगर आपको किसी छोटे से टाउन में रह रहे हैं जो जेड कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए आपको 8% HRA पे होगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ कैटेगरी हो गया। फिफ्थ में आता है आपका CMRE। CMRE बेसिकली द पीपल हु डोंट नो अबाउट द CMRE, this is the allowance that is paid to the ONGC employee if they own a vehicle. A vehicle is basically the four wheeler। ठीक है, if you are having a four wheeler, if you are having the RC and the vehicle document in your names, then you will be entitled to have 10,000 rupees per month in terms of your petrol, in terms of your vehicle maintenance and etc etc। सो 10,000 रुपये अगर आपके पास व्हीकल है तो आपको पर मंथ इन टर्म्स ऑफ द CMRE बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपका पांचवा अलाउंसेस हो गया। छठे अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं, विच इज गोना टू बी द स्पैक अलाउंसेस। दैट इज, अगर आपको चश्मा लगता है तो आपको चश्मे के लिए 18,000 रुपीज मिलते हैं, जो हर 2 साल में आपको मिलेंगे। ठीक है, सो द पीपल हु आर हैविंग द स्पेक, देयर इज अ गुड न्यूज दैट यू विल बी इंटाइटल्ड टू हैव 18,000 rupees in every 2 years. So this is the sixth allowance that ONGC pay. Now talking about the seventh allowances is basically the briefcase allowances. Yes, आपको ब्रीफकेस के नाम पे भी अलाउंस मिलता है और जो है 5,000 रुपीज पर 3 ईयर। तो सेवेंथ अलाउंसेस के टर्म्स में आपको मिलता है ब्रीफकेस अलाउंस, दैट इज बेसिकली द 5,000 रुपीज पर 3 ईयर्स। दैट मीन्स आपको 3 साल में, हर 3 साल में आपको 5,000 रुपीज इन टर्म्स ऑफ द ब्रीफकेस अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेवेंथ अलाउंसेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको मोबाइल मिलता है, बट मोबाइल में डालने के लिए सिम और मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए डेटा कार्ड, दैट ऑल्सो पेड बाय ONGC, राइट। So this would be your eighth allowances, and in terms of the eight allowances you will be having a SIM card, और आपके चॉइस है ये, whether you want to get Jio, whether you want to get Airtel, whether you want to get Vodafone Idea. So you will be asked by the manager that which SIM card you want, and according to your choice you will be having that SIM card, and the amount and the bill will be paid by the ONGC itself. And same thing is with data card, you can use any amount of the data that you want and the bill will be paid by ONGC. So ये आपका 8th allowances हो गया जो ONGC आपको पे करता है। Now talking about the 9th allowances, which is basically depend upon the performance of the company, and that is PRP. This is solely depend upon the performance of the company, and if the company goes in the loss, then there might be chances that the company won't pay you any PRP. But if the company is going in the good profit, then you can get PRP around 2 to 3 lakh per annum, right? This is basically the fact. So these were the benefits that a candidate do get irrespective of their job.
ठीक है, आप ऑन शोर में हो, ऑफ शोर में हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो या फील्ड वर्क कर रहे हो, यू आर सपोज टू गेट दीज 9 नंबर ऑफ द अलाउंसेस. But now the main thing is start for the offshore candidate, right? If you are going into the offshore area, you are putting extra effort in terms of your work, in terms of your work life balance, so there is the benefit that will be given to you in terms of hard duty allowance. Yes. तो अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफशोर के कैंडिडेट के बारे में, दैट व्हाट डज दे गेट एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस. सो 10वां जो अलाउंसेज है विच इज गोना टू बी हार्ड ड्यूटी अलाउंसेज, जो 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी रहता है, यानी कि 60,000 का 12% आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस मिलेगा. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट बेसिकली अगर हम बात करें टोटलिटी में तो ये आपका 11वां अलाउंस है, और विच इज बेसिकली द टी ए डी ए in terms of if you are doing up and down after 14 days from your hometown, then the entire amount of traveling, right, including your flights, including your cab charge, including your bus charge, train charge, each and everything will be reimbursed by the ONGC. तो अगर आप अपने घर से आते हैं irrespective of where your home सिचुएटेड, यू नो, कंट्री के किसी भी पार्ट में आपका घर है, तो उसके अप डाउन करने का और फ्लाइट का चार्ज आने जाने का, दैट विल बी बियर्ड बाय द ओएनजीसी इटसेल्फ. सो उसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट्स हो जाता है. सो दिस इज गोना टू बी द 11th अलाउंस दैट ए ऑफशोर कैंडिडेट टू हैव इन टर्म्स ऑफ द टी ए. ठीक है, नाउ अब कुछ और अलाउंसेज हैं विच आर नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफशोर कैंडिडेट को दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका पहला है आपका ड्राई फ्रूट्स. ठीक है, यू विल बी हैविंग 1.5 kg एटलीस्ट ड्राई फ्रूट्स एवरी मंथ यू कम. ठीक है, तो आपको हर मंथ 1.5 kg ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं. सेकेंड अलाउंस जो ऑफशोर कैंडिडेट को दिया जाता है इज सोप, बेसिकली साबुन. ठीक है, तो आपको 14 डेज में 14 मिनिमम सोप दिए जाते हैं. दिस इज गोना टू बी द सेकेंड बेनिफिट, राइट, अदर देन दैट द मॉनेटरी बेनिफिट्स. तो आपको 14 डेज में आपको साबुन दिए जाते हैं, और आपके पास एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इतने साबुन हो जाएंगे दैट यू कैन नॉट यूज. नाउ आपका तीसरे तरीके का जो अदर देन दैट मॉनेटरी बेनिफिट्स में आपको मिलता है वो होता है आपको कॉस्मेटिक किट. ठीक है, जो आपको हर क्वार्टर में मिलती है. तो उस कॉस्मेटिक किट में आपका तेल, शैम्पू, साबुन, यू नो, कंडीशनर, जेल, परफ्यूम, each and everything will be there in the cosmetic kit, and that will be given to the offshore candidate in each and every quarter. So ये तीसरा बेनिफिट है जो offshore कैंडिडेट को मिलता है. सो द पीपल हु आर वंडरिंग बिफोर दैट व्हाई डू ए इंडिविजुअल विल चूज, व्हाई वुड ए पर्सन विल बी हैप्पी एट द ऑफशोर. सो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट दैट ए ऑफशोर कैंडिडेट डू गेट इन टर्म्स ऑफ द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दैट आई टोल्ड यू. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज बेसिकली द 14 डेज ऑन ऑफ पैटर्न. तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये कन्फ्यूजन है कि क्या आप हर दिन काम करके हर दिन गेस्ट हाउस में जाते हैं, या 14 डेज बाद जाते हैं, या 7 दिन के बाद जाते हैं, या अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाता है तो वो जा सकता है कि नहीं जा सकता. ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट. सो द फर्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन दैट डू वी गेट ईच एंड एवरी डे टू द ओएनजीसी गेस्ट हाउस इज नो. आपको 14 दिन बाद ही जाना है, until unless you are having any some serious measures. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया है देन ओनली यू कैन गो, अदरवाइज यू विल बी लीविंग द ओएनजीसी रिग आफ्टर मिनिमम 14 डेज. ठीक है, तो ये आपका 14 डेज का पैटर्न हो गया. आपको इसके अलावा लीव मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ CL, EL, मेडिकल लीव. तो ये सारी लीव आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं. आपको 14 डेज का और इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, डोंट रिलेट दीज 14 डेज ऑफ विद लीव. आपको लीव अलग से मिलेंगी, 14 डेज का आपको अलग से ऑफ रहेगा. ठीक है, नाउ इन द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड. सो हियर इज द पॉइंट, एंड व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी नीड टू पे एट द ऑफशोर. बॉस, the cost is free, and
food quality is something that you cannot get even in the 3-star hotel. The kind of the food they are serving and the kind of the variety that will be there in middle of the sea, you know, you will be amazing that they are equipped with each and everything. अगर आपको, if you want tea, that there would be tea. If you want coffee, there would be coffee. If you want milk, there would be milk. If you want juice, there would be juice. If you want cold drink, if you want Pepsi, if you want ice cream, if you want you know, whatever you want, most of the thing will be available right there. You know, आपको fruits मिलेंगे, आपको lunch, dinner, tea time, each and everything will be there. क्योंकि the work is basically the very hardcore physical work, so they need to feed you in the same potential, right? तो आपका food की quality बहुत बहुत शानदार रहती है, that is without any cost. ठीक. Now moving to the fourth point, that is basically the shift, right? तो शिफ्ट इज गोइंग टू बी 12 आवर शिफ्ट. आपको सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करना पड़ेगा अगर आप डे शिफ्ट में हैं. और इफ़ यू आर इन द नाइट शिफ्ट देन यू नीड टू वर्क फ्रॉम द 7 PM इन द इवनिंग टिल द 7 AM इन द मॉर्निंग. ठीक है. तो अगर आप 14 डेज के लिए जाते हैं तो द थिंग इज दैट फॉर द फर्स्ट 7 days you will be either in the night either in the day, right? And the next 7 days just opposite to this. अगर आप पहले 7 दिन डे में थे तो अगले 7 दिन आप नाइट में रहेंगे. अगर आप पहले 7 दिन नाइट में थे तो अगले 7 दिन यू आर गोइंग टू बी इन द डे शिफ्ट. So that was the whole thing that I told you in terms of your salary, in terms of your 14 days on off pattern, and in terms of the quality of the food, and in terms of the shift and the kind of the work that you need to do out there, right? So after this, if you calculate your overall salary, or if you see that how much amount of the money you are going to get in a year by being into the ONGC offshore area, so it comes around 18 lakh per annum. Yes, you are right. You will be having 18 lakh in a year in your account if you are being into the ONGC offshore area. So if you have chosen ONGC area, or if you are targeting ONGC, especially the offshore area, then you are in the right direction to earn the money, right? So this was the whole thing that I wanted to tell you. And if you find this video useful, and if you get motivated by seeing this video, do subscribe to my channel and hit the like button. And if you have any query related to anything regarding PSU, GATE, engineering service, IES, then you can write down your query in the comment section. I'll be replying each and every individuals. So thanks for watching the video, and stay tuned till the upcoming video. Good.